children, today let's start with chapter number 6, Globe, the model of the Earth. So in this chapter, we will study about the globe. So our Earth is a unique planet because of the presence of life. It exists because of the presence of air and water. So the Earth is the home of human beings, animals and plants. So in olden days, people believe that the Earth was flat and though they travel too far of the edges, they would fail. So philosopher and explorer Pythagoras, Aristotle and Magellan Copernicus, they changed the opinion of the people about the Earth. What they did, they said that Earth is round in shape. Sir Isaac Newton suggested that Earth is not a perfect sphere but somewhat flattened at the tops. एक perfect sphere नहीं है, flat top से थोड़ा क्या है flat है, pole से क्या है flat है. What is globe? It is a man-made model of the Earth. It is simplest and the most accurate way to represent the Earth. The map drawn on the surface of the globe shows the relative size उनसे. ये आपके रिलेटिव साइज बोला क्या कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट हैं, क्या इतने ओशन है, सब कुछ बताकर. Children, you have studied that we have 7 continents: Asia, Africa, North America, South America, right? And Africa, and Australia, Antarctica, right? So आपका we have 5 oceans: Pacific Ocean, ठीक है, Indian Ocean, Atlantic Ocean, and Arctic Ocean. Now the biggest landmass surrounded by water is on the all sides called continent. Globes के 2 points होते हैं, that is northernmost point and southernmost point. नॉर्दर्नमोस्ट पॉइंट को आप क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, जो आपका यहाँ पे लाई करता है. दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट इज द साउथ पोल, जो आपका यहाँ पे लाई करता है नीचे, राइट. एंड दे रन फ्रॉम, कहाँ से रन करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट. कहाँ से रन करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रन एंड दे फॉर्म अ फ्यूचर. नाउ दे आर नंबर्ड फ्रॉम इक्वेटर. देखो जो आपका इक्वेटर है, मैं आपको बताती हूँ. इक्वेटर सिचुएटेड एट 0 डिग्री. ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक. आर्टिक सर्कल आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, राइट. They are the important parallels. Earth has 2 endpoints, North Pole and South Pole. Longest of the parallel is the greatest circle. So we have Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Cancer आपका कहाँ पड़ता है, Northern Hemisphere में, और Capricorn Southern Hemisphere, right? Arctic Circle in Northern Hemisphere, Antarctic Circle in what, Southern Hemisphere. So we can say that study about lines of longitudes मतलब लंबी लंबी लाइन, latitudes मतलब लेटी हुई, जो मैंने आपको बताया, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सब क्या है, लैटिट्यूडनल लाइन है. So longitudes are 360 in number and all such inland, and these lines are called meridian of longitude. So 1884 में all the countries of the world decided that meridian passing from the observatory at Greenwich, London in UK, and it's called Greenwich line भी कहते हैं, prime meridian भी कहते हैं, right? Now locating a place. If we want to locate a place on a globe, we must know about its latitudes and longitude because the point at which these two lines cross each other, उसे हम क्या कहते हैं, intersection of line. There are 180 longitudes to the east of prime meridian and 180 longitude to the west of prime meridian. हम इनको मार्क करते हैं 0 डिग्री टू 180 डिग्री एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जिसको हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. द मेरिडियम विच आर टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, उनको हम ई से मार्क करते हैं, और जो वेस्ट में है उनको डब्ल्यू से. द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस ईच अदर और एक नेटवर्क फॉर्म करता है, इसको हम ग्रिड कहते हैं. ये किसमें हेल्प करता है, इन लोकेटिंग प्लेस. Now longitudes and time zone. So we can say that there is a relationship between longitude as time as the earth rotates. Every place has its sunrise and sunset and day. And when sun is the highest point, जब सन आपके अपने हाईएस्ट पॉइंट होता है तो आप देखते हैं क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, नोन होता है. Now local time, they can be reckoned by the shadow cast of the sun, which is shortest at noon. और कब longest कब होती है, सनराइज और सनसेट के टाइम, right? When prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian, they have midday or noon, right? So then let's study about the standard time. देखो जो Greenwich observatory है उसने आपको एक standard time भी लिखा. So the local time of a place which are on different meridians, they are bound to differ. This will create problem of the people. There are about 30 meridians longitude जो पास करता है. इंडिया के पास कितने local times है, 30 local times. So to avoid this confusion, local time of central meridian is taken as the time of whole country. इसका हम standard time कहते हैं. Like Russia, इसका great longitudinal extent है. Now Indian standard time 82.5 is passing through Allahabad is considered standard meridian. ठीक है. The time is taken as noon for the whole country is from Indian standard time कहता है. What we call it, Indian standard time.
right? India, where it is situated between longitude of 68 degrees to 97 east, 80 degree north to 93.7. India has a central position on the globe, right? कहाँ है central position, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.